हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 15। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 11, a swimming pool is lit by an underwater light. A ray of light is incident on the water surface. What is the correct path for the ray of light? अच्छा, first of all we have to, first and foremost, the most important thing is that we have to make a normal, otherwise आंसर गलत हो सकते हैं, right? तो we have to make a normal in order to ensure the mark. तो पहली बात ए देख लेते हैं। लाइट यहाँ से निकल रही है और ए की तरफ जा रही है। दिस इज जस्ट अ जनरली रॉन्ग आंसर। हाउ कैन अ लाइट गो फ्रॉम हियर टू हियर? इट्स आइदर रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर और रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है ना? ए इज रॉन्ग। बी शोज रिफ्रैक्शन। व्हाट? ये जो नॉर्मल है ना, वेन एवर लाइट मूव्स फ्रॉम अ denser medium to a rarer medium, it moves away from the normal rather than going closer to the normal. ठीक है ना? You have to keep that in mind. मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था, the light is moving, should move away from the normal rather than moving, coming closer to the normal. ठीक है ना? So B is also wrong. The correct path should have been this, this in this direction. तो देख लेते हैं, D देख लेते हैं. This is also just a generally wrong answer, just like A. यह कैसे हो सकता है? This is not possible. तो C देख लेते हैं. By elimination, C is the right answer. But we'll still, अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है between, like, in the water surface. Total internal reflection हो रही है. This angle must be equal to the this angle. So C is just the right answer. As you can see, by elimination, all three options were completely wrong. By elimination, C is the right answer. Question 12. The diagram shows a ray of light incident on the boundary between two mediums W and X. The two mediums have different refractive indexes. ठीक है ना? X का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, Y और W का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. Some light is reflected and some passes along the surface between the two medium. The angle Y is greater than the angle Z. Which statement is correct? अच्छा जी, we can clearly see the X का जो refractive index है, that is greater than that of W, because total internal reflection हो रही है, and it can only happen when the refractive index of X is greater than that of W. So we can we can only see that in C or D. और आगे, and angle Y is equals to the critical angle. This is a critical angle. This will be the critical angle. It's very clear. ये critical angle होगा. And जब reflection हो रही होती है, then both of these angles must be equal. So critical angle must be equals to Y, right? So C is the right answer. D भी देख लेते हैं. X has a greater refractive index than W, and angle Z is equals to the critical angle. Angle Z is not equals to the critical angle. How many times have I told you कि जो रे होती है, रे और नॉर्मल के बीच में क्रिटिकल एंगल होता है, द एंगल ऑफ, जो एंगल हमने लेना होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो वो रे और नॉर्मल के बीच में होता है, ना कि रे और मीडियम के बीच में हो. तो सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 13. This is the question we did in last video. तो ये वाला क्वेश्चन है. So let's just copy the working. अच्छा जी. As we can see, the light enters a glass block at an angle of incidence I, and it produces an angle of refraction R in the glass. Several values of I and R are measured, and a graph is drawn on of I against sin R. Which graph is correct? Acha, the gradient of this graph must give us the refractive index, right? The gradient of this graph must give us the refractive index, because you can see the formula. N is equals to sin I divided by sin R, and if we apply the formula of gradient, N is equals to the increase in Y divided by the increase in X. ठीक है ना? So if we put that in, अच्छा, y2 minus y1 over x2 minus x1, y2 is 1,
y1 is 0, y2 x2 is 0.6, x1 is 0. So if we calculate that, n will be equals to 1.6 and n must be greater than 1 because you can जो air का refractive index is 1.0003 and the glass block का refractive index should be much higher because glass block is a denser medium than air. So it must be greater than 1. तो अगर हम देखें तो अगर बी और सी तो completely out of the picture है because इनका नेगेटिव ग्रेडियंट है लेकिन ए और डी में इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है विच मीन्स के इंक्रीजिंग नहीं कांस्टेंट ग्रेडियंट है विच मीन्स के ये जो है इनमें से ही ए और डी में से कोई आंसर है लेकिन ए में आ रहा है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6667 बस और डी में आ रहा है हमारे पास 0.6 0.6 is completely wrong. I just told you the refractive index of glass must be larger than that of air, so A is the right answer. Question 13, A is the right answer. आगे चलते हैं question 14. A ray of light R is incident on a water to air surface with an angle of incidence theta. The angle theta is less than the angle C. So it is less than the angle C. This is refraction हो रही है तो ये देख लेते हैं. अगर आप देख ही रहे होंगे कि this is the normal और नॉर्मल से जब एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम पे आती है लाइट तो व्हाट डज द लाइट डू ट्रैवल्स इन तो व्हाट डज द लाइट डू तो अभी मैंने आपको क्या दिखाया था इधर इसमें व्हाट डज द लाइट डू व्हेन अ डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में आ रही हो द लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल ठीक है ना इट इज गonna मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर यहाँ जाना था ना इसने ओरिजिनली तो इट इज gonna मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो अच्छा अब वो पढ़ लेते हैं. This statement describes the subsequent path of R. It travels into the water with an angle of reflection equal to C. No, it is not going to travel back into the water. It travels back into the water with an angle of reflection greater, no, C. It travels into the air with an angle of refraction greater than theta. अच्छा मैंने आपको भी क्या दिखाया है दिस इज द थीटा और जब this is going to move away from the normal, the angle will be the angle of refraction will increase and it will no longer be equal to the angle of theta. So it will increase and it will be greater than theta. So C is the right answer. It travels into the air with an angle of refraction smaller than theta. No, again. अगर smaller अगर होता ना तो it would have been from a rarer medium to a denser medium rather than a denser medium to a rarer medium. Question 15. What statement about light passing from air to glass is correct? From air to glass is correct. जब एक लाइट होती है ना फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस एयर टू ग्लास जब एयर में होती है ना लाइट द स्पीड ऑफ लाइट इज मच मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ देन लाइक इसका नाम क्या जब एयर में होती है द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर और जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है किसी ऑब्जेक्ट में रिफ्रैक्ट हो रही होती है द स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स स्मॉलर जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर आप एक स्विमिंग पूल में हो है ना अगर आप एक स्विमिंग पूल में हो इट विल बी मच हार्डर फॉर यू टू मूव इन कंपैरिजन अगर आप एक बाहर वाली सरफेस पे हो अगर आप एयर पे हो तो वाटर एक्ट्स एज अ या ग्लास एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस ठीक है ना सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव decreases the speed of light decreases yeah this is the right answer the speed of light decreases when it enters the glass so that's it for this video I hope you enjoyed thank you for watching Allah Hafiz